Hello aspirants, welcome to the channel, your UPSC Notes. How are you all? Tell me in the comment section, how are you all? I hope you're good. If you're not good, then you already know what to do. Comment and let me know, let everybody know what is your problem. I can assure you, we can sort it out. Alright? So, as you all know, on this channel, I share my own notes. So that you can get idea how to make notes on different subjects, which will really be helpful for prelims and mains examination. And अगर आप मेरे नोट्स से गाइडेंस लेके अपना नोट्स बनाते हैं तो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज एंड मेमोराइज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा. ऑल्सो इफ यू वांट नोट ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक या समझ नहीं आ रहा है कि किसी टॉपिक पे कैसे नोट बनाए या कैसे बनाया जाए, तो आप कमेंट में सेक्शन में कमेंट करके बताइए. आई विल हेल्प यू आउट ऑन दैट एज वेल. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी एंड वी बोथ विल ग्रो टुगेदर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर टुडेज टॉपिक आई हैव टेकन द presidential and parliamentary system. What is it all about? You know, जो मैंने नोट बनाए हैं अपने इस टॉपिक पे, देखिए आप, it is not even a 1 page note. It is just a half page note. और मैंने एक ही जगह पे पार्लियामेंट भी लिख लिया है, प्रेसिडेंशियल भी लिखा है. Though I have made other note on this topic also, on this topic which are little bit, in detailed, but those are not needed. This is sufficient if you have already read the book, if you understood. तो आपको एग्जाम पर पर्सपेक्टिव से रिवाइज करने के लिए दिस नोट इज सफिशिएंट. सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है. पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम. अब इसमें इसके फीचर्स लिख लीजिए. जब आप फीचर्स लिखते हैं एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो रिवीलिंग यू व्हाट इट इज. फीचर से ही आपको पता चलता है कि ये क्या है. सो इट इज व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम. ये भी यहीं से आंसर आपको निकल जाएगा. व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, फीचर्स. एंड और क्या चाहिए आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो इसकी मेरिट्स होगी वो इसकी डीमेरिट्स हो जाएगी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की. फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो डीमेरिट होगी वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की मेरिट हो जाएगी. सो मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम. तो मैंने अपनी नोट को इस तरह से बनाया है. अगर मुझे एग्जाम में रिवाइज करना हो इट विल बी वेरी इजी. मैंने अगर एक सेक्शन में पढ़ लिया ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में ये इमेज रहेगा कि इस तरह से मैंने ड्रॉ किया था, इस तरह से बनाया था. सो इफ दिस साइड इंक्लूड्स दिस कंटेंट तो अदर साइड पे उसका जस्ट अपोजिट ही होगा. सो लेट्स सी व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम. आई विल एक्सप्लेन लिटिल बिट सो दैट इट स्टिक्स टू योर माइंड. यू डोंट फॉरगेट इट. सिर्फ देख के तो कितना याद रखोगे. पार्लियामेंट्री सिस्टम फीचर्स. ड्यूअल एग्जीक्यूटिव. ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स वी हैव नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव. हु इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव? द प्रेसिडेंट, right? The nominal executive. And what about in presidential system? Single executive. There is no nominal, जो for example US के president हैं उनके ऊपर कोई और नहीं बैठा हुआ है. It is not like that. So they have single executive, but parliamentary system में dual executives होते हैं. For example, we have the government. The prime minister has, who heads the COM, Council of Ministers, and then we have the President of India, who gives assents or to hold the bills. In the same way, in the Britain, we have this parliamentary system where the Prime Minister is heading the government, but they are not republics, so they have the king or queen, monarchy, will take the role of as we have a president in our country, right? The second point is the majority party rule. Here, the party that wins the election, which has the maximum number of seats, winning seats, they rule the government. But what happened in presidential system? President and legislators
are elected separately. वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अलग होता है और जो उनके सेनेट में जो सेनेट के लिए जो जैसे हमारे यहाँ एमपीज हैं तो सेनेट मेंबर्स का इलेक्शन अलग होता है. दे आर नॉट इलेक्टेड in single election, right? Now, in parliamentary system, we have collective responsibility. What does collective responsibility mean? When one person or one minister, has done something wrong or anything, which is then all the COM is responsible for the deeds of the particular मिनिस्टर. सो दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल. अगर प्राइम मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर, फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइम मिनिस्टर ने या कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया रिगार्डिंग पासिंग फ्रेमिंग सम पॉलिसी, देन मे बी ऐसा होता है कई बार कि उसके कैबिनेट के जो और मेंबर्स हैं या COM के जो मेंबर्स हैं, दे मे नॉट एग्री. उनको लगता है दिस policy should not be framed or it should not be in a way as it has been discussed or presented, या कुछ चीज़ें उसमें modify करनी चाहिए, but वो बाहर आके ऐसा नहीं बोल सकता है. Why? Because they are collectively responsible. तो उसको उसमें participate मतलब उसको हाँ ही बोलना पड़ेगा. This is the best thing that we have created. This is the best policy that we are bringing. So that means collective responsibility. But what about in presidential system? Non-responsibility. Their presidential system में कोई collective responsibility नहीं होती. कोई single जो minister होता है, if he is doing something wrong, he will go. Others will stay. Here यहाँ तो collective responsibility में the government will fall. Alright. Now, the next point is political homogeneity. पॉलिटिकल होमोजेनिटी मतलब जो COM होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर टू ऑल द मिनिस्टर्स, दे आर मोस्टली फ्रॉम अ सेम पॉलिटिकल पार्टी. सो दे हैव सेम आइडियोलॉजी, दे हैव सेम टेम्परामेंट, एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्टेन इश्यूज. सो देयर इज पॉलिटिकल होमोजेनिटी. And what about in presidential system? It may or may not exist. The president क्या होता है, USA में क्या होता है, president जो होता है, he picks up his colleagues. So तो वो होते हैं whomsoever he thinks the best. तो वो उसकी आइडियोलॉजी को या पॉलिटिक्स को एंडोर्स कर सकते हैं. दे माइट हैव द सेम ओपिनियन, दीज पिक्ड पीपल्स, और दे माइट नॉट हैव द सेम ओपिनियन. So it may or may not exist. All right. Now here double membership, legislative, executive. Parliamentary system क्या होता है? One member has double membership. वो legislator का भी member है और executive का भी member है. Legislative का कैसे है? वो पार्लियामेंट, वो MP भी है और वो मिनिस्टर भी है. ऑलराइट. तो डबल ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर जो MP जो सेलेक्ट होके गया, इलेक्शन हुआ, ऑल द MPs they are going to legislate on the law, but the decision and implementation and other activities will be done by some other set of people who does not belong to parliament. No. So the people, the minister and the prime minister in the parliamentary system are picked from the elected representative from the MPs only for the member of parliament. So they have double membership. And but what happened in here? Presidential system, single membership. And the next point is dissolution of lower house. Dissolution of lower house, that means the house that is Lok Sabha is dissolved upon completion of its terms. 5 साल हो गए, और the government fall हो गई, the lower house is dissolved. Fresh elections होंगे, fresh team आएगी, the prime minister and the CM, then new house will be formed. The lower house को dissolve किया जाता है, unlike the Rajya Sabha upper house, which is a continuous house. It is never dissolved completely. Now, here, no dissolution of lower house.
प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लोअर हाउस का कोई डिसोल्यूशन नहीं होता. इट इज नॉट द केस एज इन parliamentary system. Why? Because the president is not the executive there is not the part of the parliament. That is why. और यहाँ पे I think we missed it. Leadership of prime minister. Here the prime minister, who is also elected representative, who is also an MP, who is also a legislator, a part of legislative team and executive team, has double membership. He leads the house and he is also the leader of the political party most of the times. But what happened in presidential system? Domination of the president. हमारे यहाँ तो president dominate नहीं करता, हमारे यहाँ तो prime minister ही dominate करता है ना. वहाँ पे domination of the president है. He frames the policies, he decides what's to be done, what schemes to be launched, what not to be done. So there is a domination of the president. Now, fusion of powers. Fusion of powers in parliamentary system. What does it mean? It means the same as why fusion of powers? Because legislative and executive are same people, same set of people. These the legislators, the executives are selected from the legislators, so they have fusion of power. उसमें कोई डिसहार्मनी नहीं होती है कि लेजिस्लेटर्स ने ये बोला है तो यहाँ पे पार्लियामेंट में डिस्कशन ये हो रहा है, बट मेरा जो एग्जीक्यूटिव टीम है वो चाहती है कि नहीं, वो कुछ ऐसे होना चाहिए, इस चीज़ को ऐसे फ्रेम करना चाहिए. देयर इज नो डिसहार्मनी एंड डिस्ट्रस्ट. देयर इज फ्यूजन ऑफ पावर. भाई जो पॉलिसी बना रहा है वही तो उसमें पास भी कर रहा है, वही डिबेट भी कर रहा है, वही पास भी कर रहा है, वही फ्रेम भी कर रहा है. एवरीथिंग इज डन बाय द सेम सेट ऑफ पीपल. What about in presidential system? No, there is separation of powers. The president's team is separate from the legislators. So, different separation of powers. अब ये आपने नोट्स में अपना ये लिख लिया तो आप प्रीलिम्स के तो क्वेश्चन टैकल कर लेंगे. मेंस में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, कितना भी घुमा फिरा के आए ना, तो आप लिख लेंगे. इंडिविजुअल सेपरेटली आएगा, किसी एक सब टॉपिक पे वो भी लिख लेंगे, किसी एक पे आएगा वो लिख लेंगे, या अगर इनका कंपैरिजन आएगा आप वो भी लिख लेंगे इफ यू राइट योर नोट इन दिस मैनर. नाउ लेट्स सी द मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड डीमेरिट्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स गोइंग टू बी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. व्हाट इज द मेरिट? हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव. जैसा कि मैंने बताया, दे आर सेम सेट ऑफ पीपल, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन their opinions and the attitude towards the work and ideology. So there is harmony. अब harmony है तो क्या होगा? तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि काम इजीली होगा, जल्दी से होगा, कोई बाधाएं नहीं आएंगी. distractions will be less, disruptions will be less. all right. but यहाँ क्या है? demerits में presidential system में conflict होता है. conflict between the Senate or the elected representative. Even the president is also elected between legislators and executive. Now, responsible government. Merit क्या है parliamentary system की? The government is responsible. Why? Why it is responsible? Because they are directly, all entire team members are directly elected by the people, the citizens of the country, and all of them are responsible to their people, to their constituency. So if they lose the trust, the government will fall. So they are responsible, they act responsibly. What about here? Non-responsible government. President is not responsible. President is not responsible to the people. His team is not responsible to the people. They mean business, and they do their work. Now, prevents despotism. All right, prevent despotism. मतलब because there are एक जो टीम होती है उनकी प्राइम मिनिस्टर की जो टीम होती है, they have people from different backgrounds, different cultures. India is anyway very diverse and vast country. So जो elected representatives होते हैं, they are from different corners of the country with different cultural language and everything. Taste. The taste of the MPs are different in all aspects.
their cuisine, their culture, their way of clothing, their language, how they perceive things. So as it is, a team handles everything, and team itself is very diverse, so it prevents nepotism. What about here? They have to listen to each other. यहाँ पे क्या होगा parliamentary से? They have to listen to each other and they have to form the policies which is beneficial to the masses. Otherwise उनके आपस में ही revolt हो जाएगा. कई बार हम सुनते हैं कि जो एक ट्राइबल मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट की या कैबिनेट की कोई वो प्रपोज होती है पॉलिसी रिगार्डिंग ट्राइबल, दे डोंट एग्री टू इट, सो दैट्स हाउ इट प्रिवेंट्स नेपोटिज्म. तो कंसेंसस बनाते हैं, बट हियर मेन लीड टू ऑटोक्रेसी. बिकॉज वाई? बिकॉज जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी टीम को खुद ही हैंड पिक करता है. हमारा ये मिनिस्टर ये होगा, ये मिनिस्टर, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी दिस मिनिस्टर, आई एम गोइंग टू पिक दिस पर्सन, इज चोजन, these members, his colleagues are chosen, so it may lead to autocracy. वो जो चाहे वो उस तरह से कर सकता है. Now wide representation, again the same explanation as I did here, because the elected representatives comes from different corners of the country, so representation is wide. Narrow representation, why? Because उसकी president की liking and disliking पे people are selected, so representation may not be very wide. Individuals with a particular, maybe suppose he has chosen a particular individual, all those individuals, what happens, they represent a certain section of maybe business people. अब यहाँ पे हमारे इंडिया में तो सारा बिजनेस के लोग, सारा या यू कैन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग ही सिर्फ हैं, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लोग हैं जो इलेक्ट होके गए हैं और मिनिस्टर बन गए. ऐसा तो इंडिया में पॉसिबिलिटी ही नहीं है. यहाँ पे वाइड रिप्रेजेंटेशन ही होगा, बट यहाँ हो सकता है वहाँ के प्रेसिडेंट ने सपोज ये है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हाइपोथेटिकली कि उन्होंने 5 मिनिस्टर की पोजीशन है और उन्होंने 5 पिक किए. हो सकता है 5 के 5 डिफेंस इंडस्ट्री से हों, बट पॉसिबल. सो नैरो रिप्रेजेंटेशन. And now let's come to the सब कुछ अच्छा तो नहीं होगा. If the parliamentary system was so good, so perfect, lack of any flaws, तो presidential system क्यों होता? फिर सब जगह पूरे वर्ल्ड में all the countries वो सब parliamentary system ही adopt करती है. But no, there are some demerits of parliamentary system also, and presidential system has some merits. That is why both are prevalent according to their according to what the people and the government choose. Now the demerits, unstable government. What is the demerit of parliamentary system? Unstable government. The government is always unstable. सरकार, यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, सरकार के ऊपर खतरा मंडराता रहता है. क्यों अनस्टेबल क्यों होती है? अगर उनकी कोई पॉलिसी फेल हो जाए, बजट फेल हो जाए, तो गवर्नमेंट विल फॉल. और हमने तो देखा ही है कि यहाँ पे buying and selling of legislators is very common, especially for assemblies, जो states में होती है. तो government is unstable. You throw more money, the legislator will change their party, the government will fall. But यहाँ पे क्या है, stable government है. Why? Because वो तो पार्लियामेंट का पार्ट ही नहीं होते हैं जो मेंबर्स होते हैं. दैट इज वाई. एंड नाउ नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज. व्हाट डज इट मीन नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज? कोई गवर्नमेंट आई, उसने एक पॉलिसी बनाई, सबको पसंद आई, एंड देन पीपल लव्ड इट, बट द नेक्स्ट गवर्नमेंट केम. 5 साल के बाद इलेक्शन हुए, नेक्स्ट गवर्नमेंट केम, इट फील कि नहीं, ये पॉलिसीज सही नहीं है, कुछ और करना चाहिए. लेट्स स्क्रैप दिस. सो पॉलिसी चेंज, पॉलिसी गेट्स चेंज. फॉर एग्जाम्पल द यूपीए हैड MG नरेगा, which was it was really like hand holding to the poorest of the poor.
It helped them, guaranteed 100 days of work, but what happened when the Modi government came, the NDA government came, they, though they continued, but now we hear a lot of news like their reimbursements are pending, the funds, the government has not allocated the funds to the states, so they are not being able to disburse to the people who are working. So there is like, it is, the policy is still there, but it has taken a back seat. It has not been scrapped, but the priorities of the NDA government changed. So the MG Narega suffered. So that is how there is no continuity of the policy. In the same way, we can see the NAM, non-alliance movement. The current government did not give much importance to it as it was given by the previous government, the Congress government. So the discontinuity होती है, उसमें continuity नहीं होती, on and off होता रहता है. Now what about in presidential system? Definiteness in policies. Policies are definite because the executive is different from the legislative. Now the next demerit is against the separation of powers. इसमें तो कोई, इसका demerit क्या है? Separation of power नहीं है. This is the demerit of parliamentary system. कि सब एक ही इंसान वही काम कर रहा है. Same set of people are doing two major aspect of the government. Government का क्या part होता है? Who is government? What is government? Government is your executive, legislative, judiciary. अब judiciary तो अलग है हमारे यहाँ, independent है. That is why we see कितने robust judgments आते हैं with changing time. But यहाँ पे क्या है? Separation of power ही नहीं है. Executive and legislators are same. They are same set of people. So उनमें एक, you can say as there is no separation of power, तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं. This is also a sometimes it is helpful because harmony होती है. Merit भी यही है, but demerit भी यही है, because there जब separation of power नहीं होगा ना, तो फिर it lacks checks and balances. Who will check who is doing right or wrong? Because वो तो वही हैं. हमने ही लॉ लाया, हमने ही इम्प्लीमेंट किया, हमने ही डिसाइड किया. Everything was done by us. We recommended to the president for assent, his binding or not binding. So everything is the same. So there is a separation, lack of separation of power is a demerit because it takes away the checks and balances aspect of the policy. Now what about here in the presidential system? These are based on separation. वहाँ पे clear demarcation of separation of power है, clear demarcation in their powers. So there it does not happen there. Now the next demerit, last but not the least, is government by amateurs. Parliamentary system में क्या है? Government by amateurs. By amateurs means जो नाइव होते हैं, they are not experts in their field. जो elected representatives हमने देखा है ना, बहुत सारे जो पार्लियामेंट में इलेक्ट होके जाते हैं, generally they are the candidate for the elections are picked by the political parties based on their popularity or their masculine power, not their expertise. कि ये चलो इस बंदे को टिकट दो, ये जाके ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज लाएगा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करेगा. या इस बंदे को टिकट देते हैं, ये तो स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो स्पोर्ट्स के लिए द कंट्री विल प्रोग्रेस इन द स्पोर्ट. नो, हमारे यहाँ ऐसे टिकट्स नहीं दिए जाते हैं. हमारे यहाँ क्या है, किसी को भी जो पॉपुलर है या पैसा है, हमारे यहाँ बहुत से क्रिमिनल्स जो हैं वो भी आते हैं. दे आर बीइंग गिवन, दे आर प्रेफर्ड for giving tickets. Why? Because they have money and muscle, both powers to win the election. So but इनको कुछ काम का कुछ पता नहीं होता. They are amateurs. That is why government by amateurs. So government जो सरकार चला रहे, जो ministers को most of the times, most people, most elected representatives do not have expertise of the profile that they hold. That is why they are being assisted by, they are always assisted by the bureaucrats.
What about here? In presidential system, they are governed by experts. Defense minister है तो फिर वहाँ पे जो president will select the person who is expert in that field. You know, that really helps. This is the one negative aspect I would say we have in parliamentary system, but then that is why we are democracy. Everybody is equal to fight, to fight election and then to get to the parliament. So this is all my notes that I have made on this topic. अगर आपने इतना लिख लिया इस तरह क्लियर से हेडिंग एंड सब हेडिंग डाल के पॉइंट में लिख लिया, यू विल नेवर फॉरगेट इट. इट्स वेरी इजी. एक याद कर लिया, दूसरे तो जस्ट रिवर्स ही है. इट विल बी इजी टू. आप प्रेजेंटेशन अगर डिफरेंस आ जाता है तो आप मेंस में इस तरह से आंसर राइटिंग करके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. Again, I would request you to please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for notification so that you never miss one. And see you in the next video. Love you all.